अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम एवरीबॉडी। um क्या हो गया, अभी तक बाकी लोग नहीं आए। आई होप वो आ जाए। अच्छा, जो लोग आए हैं मुझे ये बताएं, आप सबने तो कर लिया ना? अशर और वैजान, आप लोग के वोट्स आए थे? शहरियार नहीं, आप लोगों में से कई हों के वोट्स नहीं आए मेरे ख्याल से ना। वो मतलब कि आप लोगों ने कैनवा डाउनलोड कर लिया है। आरिफ का तो मुझे याद है, और भी कई स्टूडेंट्स हैं, लेकिन अभी वो लाइव आए नहीं ऑनलाइन। तो अगर लेट ज्वाइन करेंगे तो फिर उनको समझ ही नहीं आएगा ना। अच्छा हाँ, मैं आप लोग को सॉरी अनम्यूट करना अलाउ कर दूं पहले। यप। एनीबॉडी वांट्स टू से एनीथिंग? यस मिस, मैंने डाउनलोड कर लिया है। अच्छा, अशर ने डाउनलोड कर लिया। ओके, चले वेट करते हैं फिर बाकी स्टूडेंट्स का। हाँ चलिए, वेट नहीं करते हैं अभी, हम ये करते हैं कि हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। जो हमें हम लोग को वो देखना था ना, कि बेसिकली सैलाब जो आते हैं वो किस वजह से आते हैं, किस तरह से आते हैं। ठीक है, तो वो अंडरस्टैंड करने के लिए हमें वाटर बॉडीज अंडरस्टैंड करना था पहले। बेस से हर चीज को समझना चाहिए ना, बेसिक लेवल से। ठीक है, तो हम वो समझ रहे थे। ठीक है, उसी को कंटिन्यू करते हैं। कुछ वीडियोस हैं वो देखते हैं, कुछ रीडिंग करते हैं। और आज एक क्विज जो है ना, वो एज यू ऑल कैन सी ऑन द लेफ्ट साइड, गेस द वर्ड इल्यूजन टेस्ट। कुछ डिफरेंट करते हैं आज, ठीक है, एट द एंड। सही है, कैनवा का फिर देखते हैं, जरा आ जाएं सब। नहीं तो फिर कल सबको बोलूंगी टाइम पे आए, वरना जो शुरू में आ गए तो उनको स्टार्ट करा देंगे। ओके, देयर इट इज। और से देखिएगा, ठीक है। Our Earth is unique as it is the only planet that has favorable conditions for life. Our Earth is covered by both land and water. Do you know? Two-thirds of the Earth's surface is covered by water. Water has no taste and smell and is one of the essential natural resources of the Earth. Let us know about different types of water bodies like lakes, rivers, streams, seas, and oceans. River. A river is the flowing water on the land. They move towards the ocean and seas. These freshwater bodies are formed when mountains melt due to the sun's heat. They are not salty and can be used for cooking and drinking purposes after purifying them. ओके, किस वाटर की बात हो रही है? सी वाटर या रिवर वाटर, जो अभी कुकिंग एंड ड्रिंकिंग की बात कर रहे हैं? एनीबॉडी जस्ट क्विक आंसर्स। जो रिवर वाटर। रिवर रिवर। वाटर। वेरी नाइस, माशाल्लाह। Lake. A lake is a large area of water surrounded by land. They do not flow like rivers. Lakes contain either salt water or fresh water. Ponds. A pond is a small freshwater body. They are smaller than lakes and do not flow. Sometimes ponds are artificially made by humans. Oceans. The oceans are the biggest and deepest water bodies on Earth. They almost cover 71% of the Earth's surface. Almost 98% of water comes from oceans, but they are not suitable for drinking as they are saltwater bodies. There are 5 major oceans on the Earth. Sea. A sea is a large water body partly surrounded by land but is smaller than the ocean. They also contain salt water and are not used for drinking or utility purposes. Water is a precious resource, so we should keep our water bodies clean by not spoiling or throwing waste into them. Let us recall. Almost two-thirds of our Earth's surface is covered by water. A river is the flowing water formed
when mountains melt due to the heat of the sun. A lake is a large area of water collected on the land. Oceans are the biggest water bodies on earth. They contribute most of the water covering the earth's surface. A sea is a large water body partly surrounded by land but is smaller than the ocean. वाओ, कितनी जबरदस्त वीडियो थी ना। शॉर्ट एंड इनफ नॉलेज वाज देयर। अच्छा रुकिए, ये तो वाटर बॉडीज हो गई, ठीक है। अब हम लोग चेक करते हैं कि रिवर, हाउ अ रिवर इज फॉर्म्ड, ठीक है, क्योंकि हमारा फोकस रिवर्स था। सो जस्ट गिव मी 1 मिनट। ऐसा करते हैं, पहले रीडिंग हम अपनी फिनिश करते हैं, रुके, जो कल स्टार्ट की थी ना, क्योंकि वो वाटर बॉडी से रिलेटेड है, फिर फॉर्मेशन ऑफ रिवर पर आएंगे इंशाल्लाह। ओशंस एंड सीज कल हमने पढ़ लिया था। रिवर्स एंड स्ट्रीम स्टार्ट करना था। ओके, सो हु वुड लाइक टू रीड? हु वुड लाइक टू रीड? हो रही है ना, स्क्रीन शेयर हो रही है ना? शाबाश, रीडिंग करें। क्या हो गया, रीडिंग तो आप लोग बहुत शौक से करते हैं। आरिफ और अबू बकर में से जिसने भी हैंड रेस किया कि आप दोनों आज एक ही उससे लॉग इन हुए हुए हैं। जी, करें, स्टार्ट करें। अनम्यूट। Rivers are Rivers are natural flowing waterways. They usually flow towards an ocean, sea, lake, or another river. River starts from higher ground like mountains or hills. They flow downhill due to gravity as they flow. Rivers as they flow. Mm. Rivers collect water from smaller streams. These smaller streams are called tributaries. हम्म, वेरी नाइस। These ट्रिब्यूटरीज, गुड। streams are smaller versions of rivers. They are narrow channels of flowing water. Rivers and streams are vital for freshwater supply. They also provide habitats for many fish and other animals. People often use rivers for transportation, fishing, and recreation. ये बहुत अच्छी समरी है इसके अंदर, ठीक है। लेकिन ये चीजें आप लोग जब देखेंगे विजुअली ना, तो ज्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा। देन वी विल डिस्कस, ठीक है। नेचुरली फ्लो कर रहे होते हैं, ठीक है। रिवर्स हमने कहा था स्टिल नहीं होते, रिवर्स फ्लो कर रहे होते हैं, ठीक है। मेजर बात इनकी ये है। और ये फ्लो करते हैं टूवर्ड्स डिफरेंट वाटर बॉडीज, जैसे कि बता रहे हैं, दे मोस्टली दे फ्लो टूवर्ड्स ओशन एंड सीज, ठीक है। लेकिन लेक्स की तरफ भी, अनदर रिवर की तरफ भी फ्लो कर रहे हैं ना, तो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में फ्लो कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, और ये स्टार्ट कहाँ से होते हैं? हु वुड टेल? रिवर्स की सोर्स क्या होती है, स्टार्ट किधर से होते हैं? क्या लगता है आपको, शुरू किधर से होते हैं, मतलब इनका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है रिवर का, क्या लगता है? इट्स इवन मेंशन्ड है, माउंटेन से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। वहां से फिर नीचे आते हैं, और नीचे क्यों आएंगे? ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। और फिर ये कलेक्ट हो रहे होते हैं डिफरेंट स्ट्रीम्स वगैरह में, एंड दे आर कॉल्ड ट्रिब्यूटरीज। अभी ये सारे इंशाल्लाह विजुअली हम लोग देखते हैं, ठीक है। स्ट्रीम्स आर बेसिकली स्मॉलर वर्जन ऑफ रिवर्स, ठीक है, छोटे छोटे स्ट्रीम्स जो होते हैं। अच्छा चलें, बाकी इंशाल्लाह फ्रेश वाटर सप्लाई, लेकिन ये मेनली रिवर्स एंड स्ट्रीम्स होते हैं, ये याद रखना है हमने। बाकी वो इंशाल्लाह मैं आप लोग को दिखाती हूँ। चलिए लेक्स एंड पॉन्ड्स पर आ जाते हैं। हाँ जी, कौन पढ़ेगा? लेक्स एंड पॉन्ड्स, एनीबडी एल्स प्लीज? रीडिंग करनी है, शाबाश। खिजर एंड ईजान, कोई अनम्यूट करें, शाबाश, रीड करें। कर सकते हैं अनम्यूट, अगर इजी आपके लिए तो। जी जी, कर लीजिए, आप अनम्यूट करिए। Lakes are large lakes and ponds. Lakes are large bodies of still water. They are completely surrounded by land. Most lakes contain fresh water. However,
Some, like the Great Salt Lake in the United States, are salty. Lakes can form in different ways. Some form in volcanic craters, others form when glaciers carve out depressions in the land. Ponds are smaller than lakes. They are also bodies of still water surrounded by land. Ponds are often shallower than lakes. This means sunlight can reach the bottom. This allows many plants to grow all the way across the pond. Lakes and ponds are important for local ecosystems. They support many types of plants and animals. जजाकल्ला खैरा, थैंक यू। ठीक है, तो लेक्स भी लार्ज वाटर बॉडीज होती हैं, ठीक है, हमें पता है सीज भी लार्ज होती है, रिवर्स भी मोस्टली लार्ज होते हैं और लेक्स भी लार्ज होते हैं, ठीक है। जैसे हमने बात की थी ना लेक सैफुल मुलूक वगैरह, जो लोग गए हो नॉर्दर्न एरियाज में उन्होंने देखा होगा कितने बड़े होते हैं लेक्स ना, ठीक है। और दे आर कंप्लीटली सराउंडेड बाय लैंड, जैसे कि सी के बारे में हमने कहा था ना पार्शियली सराउंडेड होते हैं, ठीक है, लेकिन दे आर कंप्लीटली यानी फ्रॉम ऑल द फोर साइड्स ये दे आर सराउंडेड बाय लैंड लेक्स, ठीक है। एंड मोस्ट ऑफ द लेक्स हैव फ्रेश वाटर। सिर्फ कुछ लेक्स होते हैं जो बता रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स वगैरह में कुछ हैं जो कि सॉल्टी है लेक्स, अदरवाइज दे कंटेन फ्रेश वाटर, ठीक है। अच्छा, अब ये बनते अलग अलग तरीके से हैं। फॉर एग्जांपल जैसे बता रहे हैं कि ग्लेशियर्स जैसे कि मेल्ट होते हैं ना, तो वहां पे डिप्रेशन यानी आप समझे डीप सा होल टाइप बन जाता है, उसके ना वाटर कलेक्ट हो गया तो बस वो एक लेक बन गया, ठीक है। तो डिफरेंट तरीके से नेचुरली बन जाते हैं लेक्स। पॉन्ड्स बता रहे हैं दे आर स्मॉलर वर्जन ऑफ लेक्स, ठीक है। पॉन्ड्स भी समझ ले लेक्स की तरह ही होते हैं, सराउंडेड बाय लैंड फ्रॉम ऑल द फोर साइड्स, लेकिन ये स्मॉल होते हैं पॉन्ड्स एज कम्पेयर टू लेक्स, ठीक है। हमने देखा है ना पॉन्ड्स वगैरह तो जो हमारे डिफरेंट पार्क्स वगैरह होते हैं उसमें भी पॉन्ड्स, क्योंकि पॉन्ड्स तो मैन मेड भी हो सकते हैं ना, आर्टिफिशियली भी बनाए जा सकते हैं। तो एक आपने वाटर बॉडी बना दिया, ठीक है, उसके अंदर आपने पानी भर दिया, ठीक है, पानी का कोई भी सप्लाई वहां पे आपने वो कर दिया, प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। फिर उसमें डक्स वगैरह होती है इस तरह से, तो पॉन्ड्स तो आप लोगों ने बहुत कॉमनली देखा होगा अक्सर जगह पे, ठीक है। तो दे आर जस्ट स्मॉलर वर्जन ऑफ लेक, ठीक है। और इनमें स्टिल वाटर होता है, फ्लोइंग नहीं हो रहा होता, और दे आर नॉट सो डीप एज कम्पेयर टू लेक्स। लेक्स ज्यादा डीप होते हैं, पॉन्ड शेल होते हैं, ठीक है। बाकी इनको भी इंशाल्लाह हम लोग वीडियो में देख लेते हैं फिर। अच्छा, अदर वाटर बॉडीज, अब ये कौन रीड करेगा? अच्छा एक मिनट रुकिएगा, मुझे जरा देख लेते हैं नीचे कितना है। जी, अदर वाटर बॉडीज खजर निजान में कोई और रीड करना चाह रहे हैं? ये अदर पर्सन मुझे बताया करें पहले, ठीक है, कि कौन बोल रहा है। Ma'am, Izan Noor. जी जान। Other water bodies, glaciers and ice caps. These are huge masses of ice. They are formed from compacted snow over many years. Glaciers move very slowly. They are the largest freshwater reserves on Earth. Wetlands. These are areas where water covers the soil. This happens all the time or for long periods. Examples include swamps, marshes, and bogs. Wetlands are important for filtering water. They also provide homes for unique wildlife. Estuaries. These are places where a river meets the sea. Here, fresh water mixes with salt water. Estuaries are very rich in nutrients. They are important nurseries for many fish and shellfish. अच्छा ईजान एक मिनट Canals. रुकिएगा। हाँ, कैन somebody help us in pronouncing this word correctly? क्योंकि मुझे भी नहीं पता। हम आई कैन जस्ट मेक अ वाइल्ड गेस कि ये एस्चुअरीज है मे बी, लेकिन है ना, ये थोड़ा सा डिफरेंस है। मैंने इस वर्ड को काफी अरसे से नहीं पढ़ा, इसलिए मुझे इट्स ओके, इट्स ओके, चले। जी कंटिन्यू करेगा ईजान। Canals. These are artificial waterways built by people. They are used for irrigation, drainage, or navigation. The Panama Canal is a famous example. Connects the Atlantic and Pacific Ocean. Reservoirs. These are artificial lakes. They are usually created by building a dam across a river. Reservoirs store water for drinking, hydro, hydroelectric power, and irrigation. ओके वाओ ग्रेट। ये सारी चीजें आपको इंशाल्लाह वीडियो में दिखाई जाएंगी, ऐसे डिस्कस करने में बोरिंग भी हो जाएगा, होता शायद समझ भी नहीं आए। ओके समबडी एल्स, ये लास्ट टॉपिक है, इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर बॉडीज। मैम प्रोनाउंसिएशन का बताना था। हम्म। एस्चुअरीज प्रोनाउंस है। एस्चुअरीज। एस्टुअरीज, ओके थैंक यू। चलें, इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर बॉडीज कौन पढ़ रहा है? हम्म, आरे पढ़ ले। ठीक। हम्म। Importance of water bodies. Water bodies are essential for life on Earth. Habitat.
They provide homes for countless species of plants and animals. Water supply. Rivers, lakes, and reservoirs are major sources of drinking water for humans. Climate regulation. Oceans help regulate Earth's climate. They absorb heat and carbon dioxide. Transportation. Rivers and oceans can be used for travel, have been used for travel and trade for thousands of years. Recreation. Many people enjoy activities like swimming, boating, and fishing in water bodies. Protecting our water bodies is very important. This helps keep our planet healthy for everyone. वाह जबरदस्त चेक करें वाटर बॉडीज की इंपॉर्टेंस ठीक है कि दे प्रोवाइड होम्स फॉर सो मेनी स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ठीक है फिर वाटर सप्लाई के लिए तो ऑब्वियस है ठीक है कि वाटर बॉडीज की जरूरत है ही है और वाटर सप्लाई के लिए मेजरली क्या यूज होते हैं रिवर्स लेक्स एंड रिजर्वॉयर्स अब ये दिखाएंगे इंशाल्लाह फिर आपको ठीक है क्लाइमेट रेगुलेशन के लिए भी जरूरी है वाटर बॉडीज Okay, what do? They absorb heat and carbon dioxide. Wow. ठीक है फिर ट्रांसपोर्टेशन के लिए रिवर्स एंड ओशंस वगैरह यूज होते हैं है ना शिप्स बोट्स वगैरह के थ्रू हम मूव कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर और क्या रिक्रिएशन पर्पसेस के लिए भी ठीक है स्विमिंग बोटिंग कितनी सारी चीजें वाटर बॉडीज में हम इंजॉय कर सकते हैं ना ठीक है चलिए मोटी मोटी बातें ये थी बाकी जो हमारा मेन पर्पस है उसकी तरफ मूव करते हैं उम्म, एक मिनट ओके ठीक है हाउ इज अ रिवर फॉर्म्ड इसको देखते हैं हम वीडियो से एक वीडियो है जिसमें एनिमेशन के थ्रू इन्होंने बताया हाउ इज अ रिवर फॉर्म्ड जो दूसरी वीडियो है उसमें रियल लाइफ जो पिक्चर्स एंड वीडियोस है ना उसके थ्रू इन्होंने बताया तो दोनों वीडियो प्ले करती हूँ वन बाय वन शॉर्ट वीडियोस ये Globetrotters around the world, let's set off for an adventure. It's time for How is a river formed? The course of a river is the path that it takes. A river has three courses: the upper, middle, and lower course. The upper course. The source of a river is often in upland areas, such as mountains. At this point, high levels of rain and snow combined with steep slopes lead to water flowing downhill. At this stage, the streams are small and narrow. The course of a river is the path that it takes. A river has three courses: the upper, middle, and lower course. कोर्स का ऑल्टरनेट वर्ड बताएं अपर कोर्स मिडिल कोर्स लोअर कोर्स तो द हम्म Path. Path. एग्जैक्टली इट इज द पाथ वेरी नाइस The upper course. The source of a river is often in upland areas, such as mountains. At this point, high levels of rain and snow combined with steep slopes lead to water flowing downhill. At this stage, the streams are small and narrow, and there is less water than ठीक है और ऊपर अपहिल माउंटेन से स्टार्ट हो रही है ये देखें ये स्ट्रीम्स हैं ठीक है स्ट्रीम्स ये फॉर्म हो रही हैं और फिर नीचे आ रही हैं ठीक है नीचे कलेक्ट हो रही हैं other Ma'am. parts of the river's journey. जी बेटा यस जी मैम मैंने बस आपको बताना था कि ना जब आपने कैप्शन बंद की थी ना तो आप सेटिंग्स में जाके किया था तो वो सी प्रेस करके भी ऑन ऑफ हो सकते हैं. अच्छा कैप्शंस अच्छा लेट मी ट्राई Because of this, water flows very वाह जबरदस्त मुझे ये बताएं ये बात आपको पता कैसे है ये जो आप लोग को इतने सारी टिप्स पता होती हैं आप लोग को कैसे पता होती है मुझे ये भी जानना है भाई यार बेसिकली जब यूज कर रहे होते हैं और जब उस बटन के ऊपर हवर करते हैं ना तो वो उसकी शॉर्टकट लिखी हुई होती है. यहाँ पे जैसे इधर कह रहे हैं नहीं सेटिंग्स के ना लेफ्ट पे एक कैप्शंस का भी बटन है उधर से भी हो सकता है. हाँ हाँ नहीं आपको तो ये कैसे पता कि सी से होता है मैं ये पूछूं क्योंकि इसके ऊपर जब हवर करते हैं फिर वो उसकी शॉर्टकट लिखी आती है. अभी तो नहीं आ रही है ऐसे ना नहीं इधर नहीं सेटिंग्स को बंद करें. ओके हाँ ये जो ब्रैकेट में है ओके वाओ ग्रेट माशाल्लाह मुझे सिखाते रहा करें आप लोग ये चीज़। जी कुछ कह रहे हैं आरे बाप
इस बटन को प्रेस करके भी हो सकता है, तो सेटिंग्स के थ्रू करने की जरूरत नहीं फिर आती। अच्छा, और उससे भी आसान है कि सी प्रेस कर दे। वाओ, माशाल्लाह, जबरदस्त। अल्लाह ताला आप लोग के इल्म में और इजाफा फरमाए भाई। माशाल्लाह। Small and narrow, and there is less water than other parts of the river's journey. Because of this, water flows very quickly. It moves rapidly through a narrow channel of rocky hills or mountains where it can wear away rock to create waterfalls and valleys. Tributaries are also formed in the upper course of a river. These are small rivers or streams that join to the main river. ठीक है, ये देखिए स्मॉलर स्ट्रीम्स ये जा रही है नीचे, और ये क्या कहला रही है? ट्रिब्यूटरीज। ठीक है। The more tributaries that join the river, the more powerful the speed of the river becomes as it travels. The place where the tributary and the main river meet is called a confluence. The middle course. As the land becomes flatter, the river moves into its middle course. In the middle course, the river is wider and deeper. There is more water and it does not flow as quickly. Instead, it begins to twist and turn, creating loops, curves, or meanders. At this stage, the shape of the river is constantly changing due to erosion. On its journey from the middle to the lower course, the river's meanders become more noticeable. Rivers make extreme loops. Eventually, with continued erosion, these loops join together. Finally, the river will take a straighter, more efficient course, cutting off the meander altogether. When this happens, an oxbow lake is formed, creating a separate, freestanding body of water while the river continues its new channel. Eventually, the oxbow lake will dry up. The lower course. As the river has now straightened, it is entering the lower course stage. When the river reaches the lower ground, it begins to widen, slow down, and flatten out. This usually happens when it reaches an ocean, lake, or wetland. In the lower course, the river has a wide floodplain. This is a flat area of land around a river that is covered in times of flood. A floodplain is a very fertile area which makes them a good place for agriculture. Every time a river floods its banks, it will deposit more silt or alluvium on the floodplain. A build-up of alluvium on the banks of a river can create levees which raise the riverbank. An estuary is where a river meets the sea. There, salt water mixes with fresh water to become what is known as brackish water. The river becomes wider and wider and flows slowly to the ocean or sea. Rivers often carry a lot of soil, sand, and other material. When the momentum of a river slows at its mouth, some of that material settles. Over the years, this material builds up to form a delta. The surface of a delta is almost level, and the river usually flows across it in several small branches. At the end of its course, a river enters the sea. Remember to click the subscribe button and visit grammarsaurus.co.uk for teaching resources to accompany this video. वाओ, कुछ ऐसी भी चीजें थी जो दिल चाह रहा है इसको और फर्दर एक्सप्लोर करें। सो लेटर ऑन इंशाल्लाह। The journey of a river. Oceans and seas are always full to the brim, but where does the water come from? Let's take a journey from source to sea to find out. Source. The start of our river journey, high up in the mountains and hills, is called the source. Sometimes the water source is a natural spring where water bubbles up from deep underground. Often the source is rainwater and melting snow running downhill, gathering speed as it goes. Upper course. This ठीक है, मेन सोर्स फिर क्या हुई? एक तो रेन वाटर, जब बारिश होगी, ठीक है, तो उसकी वजह से फिर पानी नीचे माउंटेन्स में फ्लो करेगा। फिर उसके अलावा जब ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं,
है, तब भी पानी नीचे की तरफ फ्लो करेगा। उसके अलावा जो अंडरग्राउंड वाटर जमा हुआ होता है ना, ठीक है, वो भी जब फ्लो करता है नीचे, तो ये तीन मेन सोर्सेज होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वाटर माउंटेन से डाउनहिल फ्लो करता है। एक मिनट रुकिएगा, गिव मी 1 मिनट, मैं कॉल अटेंड कर लूँ, जस्ट 1 मिनट प्लीज। जी जी, आई एम सॉरी एवरीबॉडी, वो कोई आ गया था असल में। Underground. Often the source is rainwater and melting snow running downhill, gathering speed as it goes. Upper course. This first part of a river's journey is called the upper course. As water rushes downhill, it flows over rocks and boulders, dragging them along with it down the steep slope. Over many years, water carves paths into the rock beneath it, creating streams and rivers. If the rock is soft, it can wear away so much that huge valleys and canyons are formed. Waterfalls. Waterfalls are formed in places where hard rock meets soft rock. The soft rock wears away quickly, but the hard rock takes much longer to erode and ends up being much higher up than the soft rock. Middle course. The river slows down when it reaches flatter ground. This is called the middle course. Rather than flowing in a straight line, natural erosion causes a river to meander, bending and looping through the countryside. Tributaries. Rivers and streams join together along the way. They eventually form larger, wider rivers. Small rivers that feed into bigger rivers are called tributaries. Lower course. Eventually, the river reaches the lower course. The river often widens out into estuaries or deltas where sediment, sand, soil and rock carried many miles by the river builds up. The sediment slows the water down and provides a rich source of nutrients for plants and animals. The end of the river, where it flows into the ocean or sea, is called the river mouth. चलें, सो दैट्स इट। फिर इंशाल्लाह हम लोग कंटिन्यू करेंगे। अब हम लोग डायरेक्टली वो देखेंगे इंशाल्लाह, ठीक है, फ्लड्स वाली चीज। अभी तो नहीं, अभी मैं आप लोगों को क्विज पे मूव कराती हूँ, ठीक है, एक मिनट रुकिएगा। Hi, friends! Welcome to Quizzer Cat. Let's unlock your hidden brain power. You will have 10 seconds to guess each optical illusion. Can you read the hidden word or number? If you're ready, subscribe to the channel and let's start from easy to incredibly difficult levels. Do you see the hidden number here?
जी शहरियार। जी शहरियार, क्विक, अनम्यूट करिए बेटा। ओ सॉरी, एक मिनट, हाँ अब अनम्यूट करेगा शहरियार, अब ट्राई करें। 5. 5, वेरी गुड। Yes, it's number 5. फैजान। Wow. वाह। अगेन वैजान। बाकी लोग का हैंड रेज मेरे पास लेट शो हो रहा है। जी वैजान, आप कर दें ये वाला भी। 777. 777, वेरी गुड। जल्दी से आप लोगों ने हैंड रेज करना है, ठीक है, ये इजी वाले हैं। आरिब एंड अबू बकर। Ma'am, it's line. लाइन। शाबाश, चली चली। खिजर निजान। Ma'am, art. आर्ट। आरिब एंड अबू बकर। Ma'am, dog. डॉग। बाकी लोग भी ट्राई करें प्लीज। कौन कौन रह गए? जी शहरियार। 911. 911। खिजर निजान। 333. 333। जी खिजर निजान। Ma'am, यस, केस इट इज, वेरी गुड। एक सेकंड। वैजान। वैजान बेटा, अनम्यूट। B. बी। जी खिजर निजान। 112. डबल 1 2। खिजर निजान। 1+1. 1+1। आरिफ एंड अबू बकर। 13. 13। अशर। अशर बेटा, अनम्यूट करेगा। जी अशर। Drop. ड्रॉप, वेरी नाइस। Drop. गुड।
शहरयार। मैम 80। 80। फैजान। कलर। शहरयार। ग्रीन। ग्रीन। ग्रीन ही है ना, बाकी अभी कुछ और तो नहीं है। हाँ हाँ, ग्रीन। खजर। खजर निजान। ब्लू। ब्लू। हम्म। टाइम तो नहीं खत्म हो गया? टाइम इज अप लास्ट। नेक्स्ट टाइम इसी का डिफिकल्ट वर्जन करेंगे, ठीक है? मैं देखना चाहती हूँ आप लोग ये कर पा रहे हैं तो। लास्ट वन, ओके? फिर टाइम्स अप। चलें जल्दी से बताएं। अशर बताएगा बेटा। जी अशर अनम्यूट करेगा बेटा। क्विज। 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 चले। मजा आएगा इसका जब डिफिकल्ट वाला हम करेंगे ना, वो चैलेंजिंग तो हो। चले। ओके, जी। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। कल मिलते हैं इंशाल्लाह। ठीक है, टाइम पर आइएगा। तो इंशाल्लाह फिर कल प्लान करते हैं। मैं प्रॉमिस नहीं करी, लेकिन प्लान करते हैं फिर कि कैनवा करें इंशाल्लाह, ठीक है? ओके जी। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी जी, खजर इंसान कुछ कहना अल्लाह है? मैम। जी जी, बोलिए बोलिए। हाँ हाँ। कल क्लास कितने बजे होगी? कल। वेरी गुड क्वेश्चन। मैं अपडेट करती हूँ, ग्रुप पे बताती हूँ, ठीक है? आप लोग बताएं कितने बजे लूँ? अच्छा। 220 इसी लूँ या टाइम पे। 440? हाँ। इसी टाइम। 220 आप ले सकते हैं या फिर इम्पॉसिबल, या ले भी सकते हैं? हाँ। मिस 440 सही रहेगा। 440 से क्या है? चलिए ओके, मैं अपडेट करती हूँ, ठीक है? जैसे अवेलेबिलिटी होगी ना उस हिसाब से। थैंक यू सो मच। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।